of the anesthetic consideration for the facio-maxillary trauma. जो एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट्स है उसमें आपके फर्स्ट पे आते हैं इंट्रोट्रेकियल इंटूबेशन. सो इंट्रोट्रेकियल इंटूबेशन आपको तभी चाहिए होगी जब आपके मल्टीपल इंजरीज़ हो और वो इंजरीज़ जो है वो एक्सटेंसिव टू सॉफ्ट टिश्यूज़ हो और वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन हुई और वो सम सॉर्ट ऑफ सीरियस इंजरीज़ हो और उनको जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हो तो तभी आप जो है वो इंट्रोट्रेकियल इंटूबेशन वो कंसिडर करते हैं. So tracheostomy, it is a surgical establishment of an opening into the trachea. The indication for the tracheostomy is when prolonged artificial ventilation is required and there is an obstruction of the upper airway, and to facilitate anesthesia for the surgical rape in certain cases, and to ensure a safe post-operative recovery after extensive surgeries, and for all those patients who have a following obstruction of the airway from the laryngeal edema. In case of the serious hemorrhage in the airway, तो आप तभी आप जो है वो इन 4-5 कंडीशन में आप ट्रेकियोस्टमी कंसिडर कर सकते हैं. While talking about the needle cricothyrotomy and new generation supraglottic airway devices, वो अभी कंसिडर कर सकते हैं. So the anesthetic consideration or management during emergency. So the anesthesiologist role is the vital during the emergency management for the facio-maxillary trauma patient. Although securing the airway in unconscious and hypoxic patient can be done with various techniques जो कि आपके हॉस्पिटल पे डिपेंड करते हैं, बाकी एनेस्थेटिस्ट की ट्रेनिंग पे डिपेंड कर होते हैं. सो नेचर, site of the injury, associated complication and further surgical managements and equipments available decide the techniques of the airway securement. और equipments के कौन कौन से equipment जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द इंटूबेशन. सो द फर्स्ट वन इज़ द laryngoscope. एंड laryngoscope जो सर्टन ब्लेड्स होते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्टिल्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 10 cc सिरिंज होते हैं फॉर टू इन्फ्लेट द बैलून, सक्शनिंग कैथर जो है वो रिक्वायर्ड होता है यंग कराप के साथ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर जो कि पल्स ऑक्स है, एंड ओरल एंड नेजल एयरवे आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इंटूबेशन. सो ओरोट्रेकियल intubation through oral route using the difficult laryngoscope can be done if there is no contraindication for it, like C-spine injuries, grossly fragmented हो या mandible extensive surgeries हो या oral edema हो या मल्टीपल ब्रोकन या लूजन टीथ हो, तो उसमें आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं. सो ड्यूरिंग ओरल इंटूबेशन इन दिस पेशेंट स्किल्ड एनेस्थेटिस्ट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगी, शुड बी अटेम्प्टेड एंड लॉन्ग विद द वेरियस शेप साइज ब्लेड्स आपके साथ अवेलेबल होने चाहिए एंड आपके साथ स्टेरॉइड भी एंड बॉडी जो है वो आपके पास लाजमी होने चाहिए. So nasotracheal tube intubation, NIT, if there is contraindication for the oral intubation, then you go for the nasotracheal intubation. So as mentioned earlier, nasal intubation can be proceeded. So the main advantage of the NTI over the oral airway is blind fiberoptic intubation and light fan जो है वो is associated with the spine injury. The contraindication with the nasotracheal intubation is mid face instability, LU4 3 and 4 में आप नहीं कर सकते. सस्पेक्टेड बेसिलर स्कल जो है वो इंजरीज हो उसमें आप नहीं कर सकते, या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो राइनोयूरिया जो आपके टारगेट साइंस होते हैं जो ट्रॉमा पेशेंट में होते हैं या फॉल पेशेंट में होते हैं वो उसमें आप नहीं कर सकते, या कोगुलोपैथी पेशेंट में नहीं कर सकते. The technique used for the direct laryngoscope using Magill forceps assisted nasotracheal intubation, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये वो प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं. लाइट वेंट असिस्टेड एंड ब्लाइंड एंड nasotracheal इंटूबेशन, ये आप वो प्रोटोकॉल्स हैं और वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर NTI. Flexible fiber optic bronchoscopy, FFPA, is an ideal equipment for intubation in a patient who has suffering from the facio-maxillary trauma. नेज़ल ओरल रूट जो है वो आपके पर रिक्वायरमेंट, अगर आपने नेज़ल के थ्रू जाना है तो वो भी कर सकते हैं, ओरल के थ्रू भी कर सकते हैं. Retrograde intubation, this technique is carried out in a patient where there is a restricted mouth opening हो and such that only ETT can be inserted and no room for laryngoscopy, तो अगेन जो है वो आप retrograde intubation यूज़ कर सकते हैं. In this, a guide wire or epidural catheter is threaded through Tohi needle और जो 16 gauge cannula है which is intratracheal between 1 to 2 tracheal जो है वो आप उसको कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग जो है पर आप
इंटूबेशन कर सकते हैं. So the guide wire is taken then out orally or nasally as per route जो आप यूज़ करते हैं of the intubation, and जो endotracheal tube है वो loaded over the wire. Once the ETT position is confirmed, guided wire is removed and dressing applied. ये आप रेट्रोग्रेड इंटूबेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब पे वो वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं. ये आप जो है वो ट्रैकियोस्टमी भी कर सकते हैं. क्रिकोथायरॉटमी तभी आप करेंगे इंटूबेशन और वेंटिलेशन है फेल्ड, तो तभी आप जो है वो क्रिकोथायरॉटमी इज कंसिडर फॉर द चॉइस ऑफ द प्रोसीजर. द रिलेटिव ईज इन द लोकेटिंग द cricothyroid membrane as a proximity to the skin allow more expedite dissection compared with the emergent tracheostomy. इनिशियली आपने क्रिकोथायरॉटमी करना है, उसके बाद नहीं कर सकते तो फिर आप ट्रैकियोस्टमी पे जा सकते हैं. क्रिकोथायरॉटमी किट आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपके ब्लेड्स होते हैं, कैनुलास होते हैं, आपके सर्टन जो है वो सिरिंजेस होते हैं. Tracheostomy is a surgical procedure to create an opening stoma in the neck of the trachea. So a tracheostomy tube is usually placed opening to provide an airway and to remove secretion from the lungs. Also, ETT tube can be passed and ventilation should be can be आप कर सकते हैं. Additional choices of managing the emergent airway, intubating laryngeal mask airway आप क्या समझते हैं. Successful emergent use of eye intubating LMA has been described in a patient with the maxillofacial trauma. Its ease for the insertion and subsequent ability to blind intubate the trachea may be advantageous when direct laryngoscope intubation fails. Combi tube, again this is an advancement in the securing the airway. Esophageal or tracheal double lumen tube जो है आप यूज़ कर सकते हैं. Combi tube, Tyco हेल्थ केयर ग्रुप LP पलस्टॉन्सन CA जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे अगेन मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं कि कम्बी ट्यूब आप किस तरह इंसर्ट करते हैं. So I am for the facio-maxillary elective surgery. Intraoperative airway management for the patient with the maxillofacial trauma is complicated by competing needs for the airway and surgical access. Airway is secured with various techniques as mentioned earlier. आप जो है वो ट्रैकियोस्टमी से भी कर सकते हैं, क्रिकोथायरॉटमी से भी करते हैं, नेजल से भी कर सकते हैं, ओरल से भी कर सकते हैं, या फाइबर ऑप्टिक इंटूबेशन से भी कर सकते हैं. Operative management for the patient with severe facial injuries, intraoperative intratracheal tube change and tracheostomy remain common means of the managing of the airway. However, techniques such as submental and retromolar intubation have recently been scoped out to eliminate the morbidity associated with the tracheostomy as well as the risk of the intraoperative tube repositioning. तो आप कंसिडर कर सकते हैं retromolar and submental. सबमेंटल जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं फॉर द सबमेंटल इंटूबेशन. यहाँ पे पिक्चर में मेंशन किया हुआ है मैंने. दिस इज़ द रेट्रोमोलर. यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इनिशियली उन्होंने यहाँ से वो ट्यूब पास कर सकते हैं. सो maxillomandibular fixation is often employed intraoperatively when correcting both mandibular and maxillary fractures, and therefore nasotracheal intubation remains the preferred technique in these patients. Although performing curved nasotracheal tubes may be used to minimize operative field interferences. The strategies क्या क्या होना चाहिए for the difficult airway extubation. Extubate when the patient is awake. Extubate in a deep plane of the anesthesia followed by a placement of laryngeal mask airway to decrease the risk of laryngoscopy and bronchospasm. Extubation or a fiber optic bronchoscope आप कर सकते हैं. Long hollow catheter which may include connection for jet and manual ventilation. Placing various equipments available in the airway and using it for the deintubation if needed. यहाँ पे endotracheal tube exchanger है TTX, या मेटेरो मेंजेस endotracheal tube replacement obturator, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. एयरवे एक्सचेंज कैथेटर जिसको आप कुक कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जो है वो एक्सचेंजर जेट वेंटिलेशन शिल्डेन जेटेक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं. Used for the jet ventilation tracheal tube exchangers. Recommended for technique for the ASA for the extubation of the difficult airway. आपने 100% ऑक्सीजन देना होता है. Make sure suctioning of the oropharynx and trachea before the extubation. Deflect the cuff of the endotracheal tube for the cuff leakage check. Insert an airway exchange catheter through the endotracheal tube to predetermine the drift. Extubate the patient over a jet ventilation catheter if possible. Apply oxygen with the face mask or insufflation through a jet ventilation catheter.
Tap the proximal end of the to stabilize the patient. Remove the jet ventilation catheter after 30 to 60 minutes. If no obstruction appears, तो आप मजीद जो है वो उसको एक्सटूबेट कर सकते हैं completely. Thank you. If you have any question, you can ask me any comment. अगर आप लोगों को जो है वो ये PPT चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. For sure I will जो है वो मैं आपको ईमेल कर दूँगा. Thank you so much.